Hi viewers, today I will discuss about determinant, one of the important and interesting chapter in mathematics. It is very closely attached with determinant, very closely related. What is determinant? Determinant is a number, but matrix, I have already said, is an arrangement of numbers. Matrix is arrangement of numbers, but determinant is a number. Every matrix is associated with a determinant. So, what is a determinant? Every matrix is associated with a determinant. Every matrix. Now, I will describe you determinant in two ways. One is matrix associated with determinant. Second is how it is obtained, how it can be derived from linear equations. Look at here. Let us consider two linear equations in x and y. You have already learnt in class 10 the linear equations in two variables. Here is two equations. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये two linear equations है. और ये linear equations हम 10th class में पढ़े हैं. And we have already know some methods to solve these linear equations. ये linear equation को solve करने के लिए हमारे पास different methods है. जैसे equating coefficients, substitution and cross multiplication. These are different methods to solve linear equations. So, if you solve these two linear equations, you will get x is equal to b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1. Y is equal to c1 a2 minus a1 c2 divided by a1 b2 minus a2 b1. These are the solutions. These are the values of x and y. If you solve this, then you get these solutions. अगर तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू ये आएगा और ये है y का वैल्यू. तो क्वेश्चन इज, क्या हर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है? हर इक्वेशन का सॉल्यूशन है. x और y का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करेगा, इफ यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन द सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स. नाउ लुक एट हियर. This is the denominator in the values of x and y. But in a fraction, denominator cannot be zero. Denominator कभी zero नहीं होता. अगर denominator zero हो गया तो this value does not exist. So one thing is clear कि x और y, these two values will exist. That means the solution will exist if this value a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं होता. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो x और y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा. x और y का वैल्यू तब एग्जिस्ट करेगा जब a1 b2 minus a2 b1 जीरो नहीं होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, सो डियर व्यूअर्स, a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. If this value is not equal to 0, then solution exists. Then solution exists. If this is equal to 0, solution does not exist. So, dear viewers, one important thing is the solution of this equation exists if and only if this condition is satisfied. अगर a1 b2 minus a2 b1 0 नहीं होगा तो solution exist करेगा. हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. तो इट इज क्लियर दिस वैल्यू a1 b2 minus a2 b1 determines whether the solution of this equation, the system of equations exist or not. यही ही शुरुआत है डिटर्मिनेंट का. यहीं से डिटर्मिनेंट हम डिटरमिन करेंगे, डिराइव करेंगे. कैसे? ये टू इक्वेशन, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, a1 b2 minus a2 b1 यही ही डिसाइड करेगा. a1 b2 minus a2 b1 दिस वैल्यू डिटरमिन्स, यही वैल्यू डिटरमिन करेगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं. सो आज दिस वैल्यू डिटरमिन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन. ये जो वैल्यू है ये डिटरमिन करता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं. आज दिस वैल्यू डिटरमिन्स, देन दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट.
So this value a1 b2 minus a2 b1 is called as determinant. So this value is called as a determinant as it determines whether the solution exists or not. So this value is called as a determinant. Now look at here. In this equation, a1 b1 c1 a2 b2 c2 are constants. So a1 b2 minus a2 b1 is also a constant. Constant into constant minus constant into constant is a constant. That means this number is known as determinant. It is written as, we write this value. Which value? a1 b2 minus a2 b1. This value is written as a1 b2 minus a2 b1 is written in this form: a1 b1 a2 b2. This is the notation of determinant. a1 b1 a2 b2. This is the determinant. This value is known as a determinant. And इसको हम कैसे लिखते हैं? This is the general representation. Generally एक डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखते हैं, और ये अगर डिटर्मिनेंट हो गया तो इसका वैल्यू कितना है? a1 b2 minus a2 b1. सो मैंने पहले बोला था डिटर्मिनेंट इज ए नंबर. लुक एट हियर, दिस वैल्यू इज ए नंबर because a1 b1 a2 b2 are constants. So this is also a constant. This means this is a number. So determinant is a number. The first and important thing is determinant is a number, but matrix is arrangement of numbers. Numbers को हम arrange कर देंगे तो matrix मिलेगा, but determinant is a number. So here I derived this determinant from the system of linear equations. These two linear equations से हम एक determinant को derive किए. अभी मैं बता रहा हूँ कि वो मैट्रिक्स के साथ इसका रिलेशन क्या है. Every square matrix is associated with a number, a constant. Every square matrix has a relation with a number, and that number is known as a determinant. एक हर स्क्वायर मैट्रिक्स का रिलेशन एक नंबर के साथ होता है, और वही नंबर को हम कहते हैं डिटरमिनेंट. तो नंबर क्या है? लुक एट हियर. A is a square matrix, a11 a12 a21 a22. Now this is associated with a number which is known as determinant of A and is given by determinant of A and generally represented by this. This is not modulus of A, this is a determinant A, and that value is, that means the determinant value of this square matrix. ये जो square matrix है इसका determinant क्या है? Determinant of this matrix is a11 a12 a21 and a22, and the symbol is this. This is a square matrix A, and this square matrix is associated with this number. This is a number because I have already said determinant is a number. So this is a number, and this matrix, square matrix, has a relation with this determinant, this constant, and this is the associated value of matrix A. Every square matrix has a determinant, but if the matrix is not square, suppose a matrix is of order 2 cross 3, then it has not associated determinant. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हो सकता है. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे. सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए डिटरमिनेंट वैल्यू, एंड दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू, एंड वी कैन इवैल्यूएट इट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. हम इसका वैल्यू निकाल सकेंगे, और इसका वैल्यू क्या होगा? एक कांस्टेंट. दैट मीन्स एवरी मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड, एवरी मैट्रिक्स इज related with a constant. That constant value is known as, वही जो constant value को हम क्या कहते हैं? Determinant of that matrix. So every square matrix का एक determinant होता है. So this is the general formation of determinant. Like matrix,
these elements are also written in form of aij. Look at here, this is here a matrix. Now I am taking another example. A is a matrix a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. In matrix every element is written in form of aij. Here is also the elements are written in form of aij. वहां भी aij फॉर्म में लिख रहे थे और यहाँ भी हम लिख रहे हैं एवरी एलिमेंट को aij फॉर्म में, aij. So a11 this element in first row first column, this is a12 first row second column, like this. Now this is a square matrix. If this is a square matrix then it has a determinant, and the determinant of this matrix is determinant a, is a determinant a, and this will be this is the determinant of matrix A. So every square matrix has a determinant. Every matrix, every square matrix is related with a constant value which is the determinant of that matrix. Next is the general representation aij. As you know in matrix aij is the element in ith row and jth column. ये element कहाँ रहता है? ith row, in the intersection of ith row and jth column. So here is also same representation. Next is row. You know in matrix the horizontal elements form row. Look at here, this is first row, the second row, third row. Column, vertical arrangement, this is first column, second column, third column. So very similar to matrix. But next is the order of a determinant is order. In matrix the order is row into column, m into n, but the order of matrix is, order of determinant is the number of rows or columns. The number of rows or columns is the order of determinant. तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स. क्यों? इन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स में और मे नॉट बी इक्वल. मैट्रिक्स में क्या होता है कि रोज और कॉलम्स समान हो सकते, नहीं हो सकते, बट इन डिटरमिनेंट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल. एक डिटरमिनेंट में जितना रोज रहेंगे उतना ही कॉलम्स रहेंगे, क्योंकि ये कहां से आया है? स्क्वायर मैट्रिक्स, रोज और कॉलम्स समान है. सो हियर द ऑर्डर इज, लुक एट हियर, दिस इज ए मैट्रिक्स, द ऑर्डर इज 3x3. सो आई हैव ऑलरेडी सेड, मैंने बोला था अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 होगा तो हम क्या कह सकते? थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स. ऑर्डर 2x2 क्या कह सकते? सेकेंड ऑर्डर. दिस इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज थर्ड ऑर्डर. सो दिस इज थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. सो हियर इज नंबर ऑफ रोज इज 3. सो नंबर ऑफ रोज इज 3 मीन्स दिस इज ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट. थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट मीन्स the order is 3. Order is 3 and the number of rows is 3. So order means number of rows, also number of columns. So the order of a determinant is number of rows or number of columns. This is a determinant where number of rows is 3. So order of this determinant is 3, means third order determinant. Also column 3, third order determinant. Here there are 2 rows, number of rows is 2 rows है, तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स. सो दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट. कॉलम इज 2, ऑर्डर इज 2. सो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मीन्स number of rows or number of columns. Next is number of elements. Number of elements. What is the number of elements? Look at here. Here the order is 2 means 2 rows 2 columns. So the number of elements is 2 into 2, 4, 2 square. Here the number of elements is 2 square. Here the number of element is 3 into 3 means 3 square. So if order is
2, number of elements is 2 square. If order is 3, the number of elements is 3 square. If order is n, then number of elements is equal to n square. N square. If the number of elements is, if the number of rows is 4, that means order is 4. If order is 4, then the number of elements is 4 square, 16. So one important thing is always the number of elements in a determinant is a perfect square. Perfect square. 2 square, 3 square, 4 square means 4, 9, 16, 25 like this. To form a matrix, any number of elements can form a matrix. तुम suppose 5 एलिमेंट लेंगे. If you can take 5 elements, you can form a matrix. 5 एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स हो सकता है. 6 एलिमेंट के साथ एक मैट्रिक्स हो सकता है. तुम जितना भी एलिमेंट ले लो एक मैट्रिक्स बना सकते हो, लेकिन एक डिटरमिनेंट नहीं बना सकेंगे. एक डिटरमिनेंट बनाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए. मतलब परफेक्ट का मतलब 4, 9, 16. तो 469 एलिमेंट्स अगर होगा तो जाके तुम एक डिटरमिनेंट बना सकेंगे. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिटरमिनेंट इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर. नाउ इज द एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट. एक्सपेंशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू. एक डिटरमिनेंट का वैल्यू हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे. लुक एट हियर. फर्स्ट इज द expansion of a determinant. Expansion means to find the value of a determinant. Determinant का value हम कैसे निकालेंगे. Here is the determinant of first order. One important thing is the determinant of a first order. We are generally discussing always. किसी को भी पूछो वो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलेगा. लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मीन्स ऑर्डर 1, रो 1, कॉलम 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1. वो कैसा है मैट्रिक्स, वो कैसा है डिटरमिनेंट. लुक एट हियर. डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मीन्स 1 रो 1 कॉलम. लेट ए बी ए मैट्रिक्स लाइक दिस. सो दिस इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 रो 1 कॉलम. सो इसका जो डिटरमिनेंट है, द करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इज ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, this is determinant A and the value of this is A. The determinant of first order has the value, the number itself. Example is, suppose we have a determinant like this, is the value of this determinant is the number itself 2. So in this way you can find the value of a determinant of order 1. अगर फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो हम वैल्यू ऐसे इवैल्यूएट करेंगे. नेक्स्ट इज द डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर मीन्स 2 rows 2 columns. सो सपोज ए डिटरमिनेंट इज ए बी सी डी. सेकेंड ऑर्डर मीन्स 2 rows 2 columns. So the value of this determinant, how can we expand this? Expand means find the value. इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. द वैल्यू ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये कहाँ से आया था. दिस वाज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर द वैल्यू ए डी माइनस बी सी. फॉर ए डी माइनस बी सी वाज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी. So this A, B, C, D, the second order determinant has value A, D minus B, C. How can we evaluate? Look at here. The value of second order determinant is the product of the two elements in leading diagonal. जो leading diagonal में जो two elements है, ये two elements का product A into D minus the product of these two elements B, C. So AD minus BC is the value of second order determinant. One example I am taking here. Suppose we have given 2, 3, 5, 4 each a second order determinant, and the value of this is 2 into 4 minus 5 into 3.
which is equal to 8 minus 15 is minus 7. So this is the value of second order determinant. In this way we can find the value of second order determinant. Now to find the third order determinant, before evaluating the value of third order determinant, let's discuss about the minors and cofactors of the elements. Now is minors and cofactors. So the minors and cofactors of elements are to be evaluated. We have to evaluate the minors and cofactors of the elements, not of the determinants. One important thing is minors and determinants can be. One important thing is every element has a minor and a cofactor. Every element has, not the determinant has. So now to test how can we find the minors and cofactors of an element. Suppose Aij be an element. याद रखो माइनर्स और कोफैक्टर्स किसका निकालेंगे, एलिमेंट्स का, नॉट ऑफ डिटर्मिनेंट. सो सपोज Aij बी एनी एलिमेंट. Aij एक एलिमेंट है. माइनर ऑफ Aij, the symbol of a minor is Mij. Mij means the minor of Aij. This is the symbol, but what is the value of minor? The determinant obtained by omitting the ith row and jth column. Aij is the element in ith row and jth column. Aij कहाँ रहता है? In ith row and jth column. And इसका माइनर कितना है? ओमिट कर दो, डिलीट मार दो. किसको? ith row and jth column. ith row and jth column को डिलीट मार दो. जितना बचा वही है Aij का माइनर. Next is cofactor. Aij. The cofactor of Aij is Cij. The symbol of this cofactor is Cij. ये Cij क्या है? Cofactor of Aij. देखो Aij का माइनर है Mij, Aij का cofactor है Cij. And this is the value of minor. And what is the value of cofactor? In order to find cofactor, first you have to find minor. पहले minor निकालो, इसके बाद cofactor निकालेंगे. Cij का वैल्यू क्या है? -1 to the power I plus j. -1 to the power I plus j into Mij means minor of Aij. So Aij जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर कितना होगा? -1 to the power I plus j into Aij का माइनर. अब तुम बता दिया. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैसे निकालेंगे. फर्स्ट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वेयर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स A1 -2 3 4. I am making it as a determinant. If A is this matrix, then determinant A is 1 -2 3 4. This is the determinant A, and I want to find the minor and cofactor of these elements. Look at here. In order to find the minors and cofactors, first write these elements in Aij form. जब हम इवेल्युएट करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, वो जो डिटरमिनेंट है उसको हम पहले लिख देंगे Aij फॉर्म जनरल रिप्रेजेंटेशन में. तो दिस एलिमेंट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स दिस इज A11, दिस इज A12, दिस इज A21 and this is A22. Okay, now look at here. How can you find the minors and cofactors? First is minor of 1. मैं सब लिख देता हूँ. Minor of 1, minor of Aij is Mij. So symbol of minor is M. Minor of -2 is M. सबका माइनर M है, बट समान है क्या? देखो ये जो 1 है ये है एलिमेंट A11. ये एलिमेंट का नंबर पोजीशन क्या है? A11. तो 1 का माइनर मीन्स माइनर ऑफ A11. Aij का माइनर Mij है. Minor of Aij is Mij. If minor of Aij is Mij, minor of A11 is M11. So minor of 1 means minor of A11. 1 का माइनर मीन्स A11 का माइनर. सिंबल क्या है? M11. Minor of -2.
-2 का माइनर मतलब माइनर ऑफ किसका, A12, तो माइनर ऑफ A12 मीन्स M12 and minor of A21, minor of 3 means minor of A21, this is M21. Similarly minor of 4 means minor of A22, this is M22. Now I have written the symbols. अब मैं क्या सब एलिमेंट का माइनर का सिंबल लिख दिया, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, लुक एट हियर, 1 का माइनर M1 कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनर, व्हाट इज द माइनर ऑफ 1 का माइनर कैसे निकालेंगे, माइनर इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग द ith रो एंड jth कॉलम. लुक एट हियर, ये है 1 एलिमेंट, तो 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो क्या होता है कि फर्स्ट रो को ओमिट कर दो, डिलीट मार दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार दो, फर्स्ट रो को डिलीट मारा, फर्स्ट कॉलम को डिलीट मारा, जितना रहा वो है एलिमेंट का माइनर. माइनर मीन्स वो जो रो में है वो रो को डिलीट मार दो, जो कॉलम है वो कॉलम को डिलीट मार दो, जितना बचेगा जितना रहेगा वही है वो एलिमेंट का माइनर. तो 1 का माइनर, ये रो को डिलीट मारो, ये कॉलम को डिलीट मारो, कितना रहा 4. सो माइनर ऑफ 1 इज 4. माइनर ऑफ 1 इज सिंबल इज M11 एंड इज 4. सिमिलरली माइनर ऑफ -2, ये रो ये कॉलम को डिलीट मारो, कितना रहा 3. सिमिलरली माइनर ऑफ 3, रो कॉलम को ओमिट मारो, कितना रहा -2. and minor of 4 is delete this row and this column is 1. In this way you can find the values of minors and cofactors, sorry minors. In this way you can find the values of minors. Next, how can I find the cofactors? Now I have to apply the formula Cij, and the value of Cij is C11. The cofactor of Aij is Cij. Cofactor of 1 means cofactor of A11. Cofactor of A11 means C11. Aij का cofactor Cij है, A11 का C11 होगा. तो cofactor of 1 means cofactor of A11. This is C11. And what is the value? Look at here. Cij का cofactor. The cofactor of Cij is -1 to the power I plus j means 1 plus 1 2 into mij means here ij is 11 and is M11, which is equal to -1 to the power 2 is 1 into M11. M11 is 4 is equal to 4. So this is the cofactor of 1. Next is cofactor of 3 is C21, because cofactor of 3 means cofactor of A21 and cofactor of Aij is Cij. So this is C21 and the formula is Cij -1 to the power I plus j. C21 is -1 to the power I plus j means 2 plus 1 into Mij means the minor of A21. This is M21, which is equal to -1 to the power 3 is minus M21. M21 is -2, minus of -2. This is equal to 2. So in this way you can find the minors and cofactors. And look at here, Cij is equal to -1 to the power I plus j into Mij. If I plus j is even, if I plus j is even, so this is 1, -1 to the power even is 1, so Cij is Mij. Cij is equal to Mij. If I plus j is even, Cij is equal to Mij. If I plus j is odd, then Cij is minus Mij, because if I plus j अगर odd हो जाएगा, if I plus j is odd, then -1 to the power odd is minus. So I plus j अगर odd हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. That means if I plus j odd, then Cij is minus Mij. तो कोफैक्टर माइनर फर्क क्या है? अगर इवन तो Cij इज इक्वल टू Mij, अगर और Ci इज इक्वल माइनस माइनर. तो लुक एट हियर, हियर 1 1 2 मतलब इवन, तो Cij Mij समान हो गया. Cij एंड Mij आर इक्वल. हियर 2 plus 1 3, I plus j ऑड हो गया, तो Cij इज माइनस Mij. Mij कितना था
minus 2, a minus g minus 2, and this is minus of minus 2. So if I plus j is even, cofactor is equal to minor. If I plus j is odd, Cij is equal to minus minor. Now is the expansion of थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? सो ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैन बी इवैल्यूएटेड इन 6 डिफरेंट वेज. 6 डिफरेंट वेज के साथ हम एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम इवैल्यूएट कर पाएंगे. कैसे? देयर आर 3 रोज 3 कॉलम्स. यू कैन एक्सपांड with first row, the first method, first way, second row, second way, third row. These are the 3 ways. These are the 3 methods by which you can expand the third order determinant. Also, you can expand with first column, second column, third column. So, a third order determinant can be expanded. The value can be obtained in 6 different ways. But all the values are same. So you can apply any method. You can expand through any row or any column. एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू हम 3 रोज एनी रो में निकाल सकते हैं, एनी कॉलम में भी निकाल सकते हैं. दैट मीन्स हमारे पास कितना वेज है? 6 वेज है. बट ऑल द वैल्यूज विल बी इक्वल. सब वैल्यू समान होगा. सो क्या होगा कि इन व्हिच रो वी हैव टू एक्सपांड और इन व्हिच कॉलम, द रो और द कॉलम वेयर देयर आर मैक्सिमम जीरोस. अगर कोई रो और कॉलम में ज़्यादा जीरो होंगे, वही रो या कॉलम में अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा कि ईजी हो जाएगा. बट यू कैन एक्सपांड थ्रू एनी रो और एनी कॉलम. देयर आर 6 डिफरेंट वेज इन व्हिच यू कैन इवैल्यूएट द वैल्यू. सो व्हाट इज द प्रोसेस? हाउ कैन वी इवैल्यूएट इन डिफरेंट वेज? लुक एट हियर. द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इन फर्स्ट रो. इफ यू एक्सपांड इट थ्रू फर्स्ट रो, अगर हम इसका वैल्यू फर्स्ट रो की एलिमेंट लेके हम निकालेंगे तो कितना होगा? सो द वैल्यू इज, दिस विल बी एक्सपेंडेड विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट. हाउ? इफ आई वांट टू एक्सपांड दिस वैल्यू थ्रू फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो के साथ हम एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट रो का 3 एलिमेंट्स को लेंगे. We have to take these 3 elements, all the elements of first row. If you want to expand through second row, then you have to take the help of all the elements of second row. Now let us expand this through first row. That means with a11, a12, a13. ये 3 elements लेके इसका वैल्यू हम एक्सपांड करेंगे, इसका वैल्यू हम निकालेंगे. कैसे? देखो, फर्स्ट इज a11. The value of the determinant is one element into its cofactor, means C11 plus A12 into its cofactor C12 plus A13 into its cofactor. This is the value of a determinant when expanded through first row. अगर फर्स्ट रो की एलिमेंट लेकर हम एक्सपांड करेंगे, दिस विल बी द वैल्यू. कोफैक्टर तुमको पता है. सपोज वन वांट्स, सपोज कोई बोला कि नहीं मैं फर्स्ट रो में एक्सपांड नहीं करूंगा, मैं सेकंड रो के साथ एक्सपांड करूंगा. हाँ भाई होगा, क्यों नहीं होगा? देखो कैसे होता है. सेकंड रो में अगर एक्सपांड करोगे तो सेकंड रो में क्या क्या एलिमेंट है? A21 इधर, A21 and this. So this will be A21 into its cofactor plus A22 into its cofactor C22 and A23 into its cofactor C23. Similarly, first row, second row, third row, these are 3 ways by which you can expand. ये 3 methods से, 3 ways से तुम इसका वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो. इसका you can find the value of a determinant. Suppose you want to expand in columns. It may be first column, second column or third column. I am taking one example. Suppose you want to expand this through third column. थर्ड कॉलम का एलिमेंट यूज करके तुम एक्सपांड करना चाहते हो तो क्या होगा इसका वैल्यू? A13 इंटू इसका कोफैक्टर इंटू द कोफैक्टर इज C13 प्लस A23 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A33 इंटू C33. So I have written you 3 ways. So there are 6 different ways, but all values are equal. But you have to apply only one method as you wish.
generally first row or first column, or the row or column where there are maximum zeros. अगर कोई रो और कलम में ज्यादा जीरो होंगे तो इजी होगा, क्योंकि सपोज हियर इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो. सो इफ यू फाइंड there are zeros in any row or column, so please expand on that row or column because it will be easier. So this is the method to expand, but practically how can I expand this? Now look at here, how can we practically apply the method to evaluate, to find the value for determinant? So the first element is a11. Take a11 into, omit the this element is in first row, ये फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो को ओमिट कर दो, फर्स्ट रो को डिलीट मार दो, और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम को डिलीट मार दो. ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो को डिलीट मारो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट मारो. जितना रहा कितना, दिस डिटरमिनेंट a22, a23, a32, a33. Second is a12. Here will be minus. Why minus? Look at here. Here is 1 1 2 even plus, so plus a11. Here is 1 2 odd, means minus. The coefficient will minus. Power odd होगा तो minus होगा. If power is odd then minus. So a12 means 1 2 is odd minus a12 into 1 2 means first row second column. तो delete first row and second column. So these are four elements. That means determinant of a21, a23, a21, a23, a31, a33. Now third element is a13. 1 3, 1 plus 3 is even. 4 even. Even means plus. Plus a13 into, omit this row, omit this column, फर्स्ट रो को डिलीट मारो, थर्ड कॉलम को डिलीट मारो. सो दिस इज द डिटरमिनेंट. दिस मीन दैट मीन्स a21, a22, a21, a22, a31, a32, a31, a32. So this is the way to evaluate the third order determinant. Now you can expand this. ये सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हमको पता है. Also we can find this value. Now a11 into this value minus a12 into this value plus a13 into this value is the value of third order determinant. The question is, how can we expand through second row, third row easily? If you want to expand through first row, the sign for a11 is plus 1 plus 1 even, plus 1 plus 2 odd minus 1 plus 3 even, 4 even, this is plus. So a11 into, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, minus a12 into, delete this row and delete this column, this is the second order determinant, plus a13, delete this row, this column, this is the second row, this is the second order determinant. Now this is the expansion of a determinant through first row. If you want to expand through first column, the sign is 1 1 plus 2 1 odd is minus, 3 plus 1 4 is even. So this is plus, plus minus plus means a11 into, delete this row, this column means this, minus a21 into, delete this row, this column, take the second order determinant, plus a31 into, delete this row, this column, this the second order determinant into a31. So by this way you can expand through first column. If you want to expand through second row, here is 2 1 minus, for this is plus, this is minus, plus minus plus. So these are the sign, ये सब साइन है. According to I plus j is even or odd. 2 plus 2 4 even, plus 3 plus 2 5 or minus. So by this sign and in this way you can expand a second order determinant. Now I am taking one example. A determinant is an interesting determinant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is this. Now I want to expand this determinant through first row. For this symbol is plus, is minus, is plus.
First is 1 into, delete this row, delete this column. This is the second order determinant, means 1 into, delete this, 5, 6, 8, 9. Come here, is symbol is minus, minus 2 into, delete this row and this column, 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7, 9. And here is plus 3 into, delete this row, this column, 4, 5, 7, 8. Now is 1 into, second order determinant, we have already known, 5 into 9, multiply these two, 45, minus 8 6 are 48, minus 2 into 4 9 are 36, minus 42, plus 3 into 8 4 are 32, minus 35, and this, solve this, you find is 0. The value of the determinant is 0. So if someone asks you to give an example of third order determinant whose value is 0, you can't say quickly, it will take time. If it is second order, then you can say quickly, by multiplying and calculating you can say, but you can't say very soon an example of a determinant whose value is 0. A third order determinant whose value is 0, you can't say within 2 seconds, but you can say this is the determinant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is a third order determinant whose value is 0. You can say just in 2 seconds. So in this way you can find the value of third order determinant. Also ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू यू कैन फाइंड थ्रू फर्स्ट कॉलम विद द हेल्प ऑफ 1 4 7. ऑल्सो यू कैन एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट थ्रू 4 5 6, मतलब सेकेंड रो, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड कॉलम. दैट मीन्स a third order determinant can be evaluated in 6 different ways, but all the values are equal. So you can take any row or any column to find the value of a third order determinant. Now one interesting method to find the third order determinant is the Saras diagram. How can we evaluate, how can we find the determinant value of a third order determinant? In this method you have to write, look at here, this is a determinant, and how can you find, I have already said, but in Saras diagram you have to write the first column once again here. The first column is 2 3 1, write here 2 3 1. The first column, write first column here, यहाँ first column और एक बार लिखो. Write second column in here, second column is 4 1 2, write here 4 1 2. Now look at here, draw the diagram like this, here 2 1 3, then 4 5 and 1 6 3 2. These are the diagrams. Next is here 1 1 1 6 2 5 2 3 3 4. So this is the Saras diagram. Then what is the value of determinant? The value of a determinant is, multiply these, 2 into 1 into 3, 2 into 1 into 3, plus 4 into 5 into 1, 4 into 5 into 1, plus 6 into 3 into 2, 6 into 3 into 2, minus this 1 1 6, 1 into 1 into 6, minus 2 into 5 into 2, 2 into 5 into 2, minus 3 into 3 into 4, 3 into 3 into 4. So this is the value of determinant by Saras diagram, and this is 2 3 is 6, here is 20, here is 6 3 is 18, 2 is 36, minus 6 minus 20 minus 36. So by this you can find this is 0. Look at here, 6 6 minus 20 plus 20, 36 36, and also the value of this determinant is 0. So by this method you can find the value of any determinant. So this is the method of Saras diagram to find the value of a determinant. Now the example of Saras diagram. In Saras diagram you have to write first column here, 2 1 3 is first column, right here 2 1 4 is first column, right here 2 1 4. Write second column here, 3 2 1,
3, 2, 1. Write first and second column here outside the determinant. Now draw the diagram like this. 2 to 2 to 3 to 3 to 4, 1 to 1 to 1. And here 4 to 2, 2 to 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3. This is Saras diagram. So how can this help to find the value of determinant? Look at here. The value for determinant is multiply this 2 into 2 into 2 plus 3 into 3 into 4 plus 1 into 1 into 1, this 3, minus this 3, 4 into 2 into 1, 4 into 2 into 1, minus this 3, 1 into 3 into 2, minus these 3, 2 into 1 into 3, 2 into 1 into 3. By this way, you can find the value for determinant. So this is 2 to the 4 to the 8 plus 3 to the 9 4 to the 36 plus 1 minus 4 to the 8 minus 6 minus 6. So this is 8 and 8 cancel, 6 6 12 is 24. So the value of this determinant is 24. By this method, with the help of Saras diagram, you also can find the value of a third order determinant. So these are the expansion of first order, second order and third order determinant.